Hello, everyone. Thanks for joining. I am Vinny from the Teachers Academy. I have introduced myself last time also. हम पिछले 2 हफ्ते से ये फ्रेंच के वेबिनार्स कर रहे हैं. आई एम डूइंग विद यू. इसका रीजन ये है बिकॉज आई वांट दैट व्हेन यू स्टार्ट विद योर फ्रेंच जर्नी यू शुड एटलीस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज बेसिक थिंग्स. कि टेफ टीसीएफ क्या है, दोनों में फर्क क्या है, लेवल्स क्या होते हैं डिफरेंट फ्रेंच के. इफ यू ज्वाइन थ्रू अस, इफ यू लर्न थ्रू अस, then how do we function here at the teachers academy? So this is the reason I'm just choosing all these basic topics is because french start karne se pehle I want ki you should not at least waste your time in all these basic things, in knowing these basic things, and you should not invest more time in all these things, right? So I have told about my academy last week also, और उससे पहले भी. सबसे पहले मैंने जो वेबिनार किया था उसमें मैंने बात की थी टीचर्स एकेडमी की, टीटीए क्लासेस, हमारा जो न्यू ऑनलाइन ऐप है उसके बारे में. देन आई टोल्ड यू अबाउट टेफ एंड टीसीएफ स्ट्रक्चर. And today I'm going to choose a topic which is again very basic. We'll come to that. Before that, what I want is that you should again follow both our social media handles on Instagram, Facebook, YouTube को subscribe कीजिए so that you can get all the latest updates there. I tell you what happens. French मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी न्यू लैंग्वेज को सीखने के लिए एक सेट करिकुलम का होना बहुत जरूरी है. एंड यू शुड नो दैट एक स्मार्टली किसी भी चीज की ट्रेनिंग लेना जरूरी है. वी विल बी प्रोवाइडिंग यू ट्रेनर्स, एक्सपर्ट ट्रेनर्स नेटिव प्रोफिशिएंसी के साथ, बिकॉज वी बिलीव इन गिविंग द क्वालिटी एजुकेशन. एंड हमारे टीचिंग मेथड्स एंड टूल्स आर वेल नोन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे साथ अभी तक कनेक्ट अपने आप को किया हुआ है कनाडा जाने के बाद भी. सो टीटीए क्लासेस आर न्यू ऑनलाइन पोर्टल. हमने काफी रिसर्च के साथ बनाया है. हमारे स्मार्ट टिप्स एंड डेली प्रैक्टिस के साथ यू विल रियलाइज दैट यू कैन इजीली लर्न फ्रेंच. आपको फ्रेंच सीखना एक बहुत बड़ा एडिशनल एक प्रॉब्लम नहीं लगेगी. सो जो हमारे वीडियो लेक्चर्स भी हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था दैट पोर्टल सुन के सबको लगता है दैट रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे. नो, it's not going to be only recorded. It's just an additional asset that we will be providing you. But ये जो वन ऑन वन ट्रेनिंग है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. फ्रेंच फॉर पीआर इन कनाडा CLB 7 चाहिए, वर्क परमिट एक्सटेंशन CLB 5 चाहिए, टेफ TCF जैसे 2 मेजर एग्जाम्स हैं जो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए एक्सेप्ट किए जाते हैं. एंड दोनों ही आपकी प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करते हैं, और एक्सप्रेस एंट्री के लिए दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. 2 इयर्स की वैलिडिटी है. ये बात हम पिछले 2 ईयर्स से 2 वीक से करते आ रहे हैं. Then I told you about listening, reading, writing, speaking. IELTS की तरह it's going to be these 4 modules जिस पे आपको जज किया जाएगा. टेफ एग्जाम सेंटर्स की बात की थी कि इंडिया में पंजाब में, चंडीगढ़ में है, देन यू हैव इन दिल्ली. कनाडा में 4 सेंटर्स हैं. फिर हमने बात की थी कंपोनेंट्स की, वेयर आई टोल्ड यू कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग किस तरीके से आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा, क्या फर्क है टेफ और TCF स्ट्रक्चर में. एंड आई टोल्ड यू ऑल द बेसिक थिंग्स बिकॉज आई डोंट वांट कि जब आप अपना ये टेफ की प्रिपरेशन की जर्नी शुरू करो तो आपको कोई प्रॉब्लम आए. वन थिंग आई वांट टू रिपीट हियर कि प्लीज start your French learning journey with us, because not only after these webinars but बहुत पहले से, it's been like more than 1 year that students are associating themselves with us. अब इस वेबिनार के थ्रू ये हो रहा है कि कितने स्टूडेंट्स थे जिनको पता ही नहीं था दैट there are so many things, aspects to see before you start your French journey. So learn through us. I'll tell you बहुत ही affordable package है जिसके थ्रू आप ये French सीख सकते हो हमसे. We'll be providing you video lectures, but apart from that there will be one-on-one training. जो फिजिकल ट्रेनिंग, जो टीचर की इंटरवेंशन है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. देयर विल बी लाइव सेशंस एंड देयर विल बी डाउट क्लियरिंग सेशंस. देन यू विल बी जो आपकी प्रिपरेशन रहेगी दैट इज गोइंग टू बी टेफ बेस्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, स्ट्रैटेजीज हैं, सैम्पल पेपर्स है, दोज आर एग्जैक्टली लाइक द रियल एग्जाम पैटर्न. तो ज्वाइन कीजिए एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू विद एनीथिंग यू वांट टू नो. So today I'm going to explain the different levels of French language learning according to the CEFR standards.
thinking of learning French is like climbing a staircase. And how is that? You start at the bottom at A1, where you can introduce yourself, where you can say hello and ask simple questions. Next, at A2, you can survive daily life, right? Like ordering food, shopping, talking about your family. When you reach B1, what happens? You can describe your experiences, you can give opinions, you can handle everyday conversations without too much help. At B2, your French becomes professional now. You can now debate also, you can negotiate. C1 and C2 are advanced levels where you can work or study in French. You speak like a native with a native. So this is about the major things that I've told you. But before that, I just mentioned about CEFR. So what CEFR? It's the full form is Common European Framework of Reference for Languages. तो ये क्या है बेसिकली? इट इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन्स एबिलिटी ऑन लैंग्वेज एबिलिटी ऑन अ 6 लेवल स्केल. अब ये 6 लेवल स्केल के अगर फ्रेंच में देखा जाए, A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2. सो A1 को हम कहते हैं ये आपका बिगिनर लेवल है. देन वी हैव A2, दैट इज योर एलिमेंट्री. वी हैव B1, दैट इज योर इंटरमीडिएट. B2 अपर इंटरमीडिएट एंड C1 एडवांस लेवल. C2 तो बिल्कुल आप जब कहते हो कि यू आर अ प्रोफिशिएंट, यू आर लाइक अ नेटिव फ्रेंच स्पीकर. So each level defines what a learner can do in reading, writing, listening and speaking. तो हम लेवल वाइज लेवल समझेंगे कि अगर एक A1 लर्नर है तो वो क्या कर सकता है जब तक वो A1 लेवल पे बैठा है. तो फ्रेंच की जो इंपॉर्टेंस है फॉर लर्नर्स वो मैंने आपको स्टडीज में, ट्रैवल में, इमिग्रेशन में, जॉब्स में समझा दी है. A1 is your beginner level, basic introduction, simple conversations, everyday जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं सब आपके A1 में कवर होते हैं. आप A1 के एंड में आते आते सेल्फ इंट्रोडक्शन अपनी दे सकते हैं. सो ऑब्वियसली जब आप A1 से स्टार्टिंग करते हो तो आपकी स्टार्टिंग होती है अल्फाबेट से, बिकॉज A to Z is not like A for apple, B for ball. This is not how we say that A, B, C, D. It's going to be different. Then you have numbers. Then it goes on for 1.5 to 2 months जहाँ पे आपके सिर्फ बेसिक्स की बात होती है. And as far as I have started learning a little bit about it, I have realized that A1 is all about 1 to 2 words. जहाँ पे जो ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश टू फ्रेंच की वो हम सिर्फ बेसिक लेवल तक रखते हैं. Then A2 comes, which is known as elementary. It's again about simple task and familiar topics. वो A1 की ही continuity में रहता है, बट यहाँ पे अब आपको छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ इन दिस लेवल B1 यू कैन लर्न फ्रेंच फॉर योर सर्वाइवल. ज्यादा सिचुएशंस होती हैं व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, इवेंट्स, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंसेस. जो आर्टिकल्स या नाउन्स, प्रोनाउंस भी आपने A1 A2 में कवर करे होते हैं ना, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो B1 में आते आते थोड़ी इंक्रीज हो जाती है. B2 is upper intermediate where you can learn to argue a point of view, you can understand complex text, you can now interact with the native speakers easily. C1 is advanced level for social, academic, professional purposes. C2 is mastery or near native proficiency. So when you will start learning French, you would understand अगर आप हमसे करते हो that how a conversation looks like. That एक कॉन्वर्जेशन जो है वो A1 में कैसे साउंड करती है, B1 में कैसे साउंड करती है और C1 में कैसे साउंड करती है. ये 3 लेवल से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे. Now how do we work here is like we give you a lot of role play activities where we can just ask you to order food in a restaurant. Job interviews आप दे सकते हैं, emails लिख सकते हैं when it comes to writing part. So we work like that when you finish with your A2, that there are a lot of practical things that we follow. Activity based आपकी पूरी learning होती है, ठीक है. And then TTA can help you in a way that we cover your A1 A2 plus your TEF TCF preparation in 7 to 8 months. So it's a smart way of covering. अगर आप 7 to 8 months इन लेवल्स को कंप्लीट करने में इन्वेस्ट कर रहे हो, then it's important कि आपको पता हो कि in terms of skills आप हमारे थ्रू करते हो तो आप क्या क्या अचीव कर पाओगे. In terms of skills, if I have to talk about listening,
आप जब A1 A2 लेवल पे होगे तो द वे आवर ट्रेनर्स वर्क, वो 2-3 महीने में आपको इतना प्रोफिशिएंट कर देंगे कि आप स्लो एंड क्लियर स्पीच अंडरस्टैंड कर पाओगे। स्पीकिंग में यू आर एबल टू स्पीक एटलीस्ट शॉर्ट सेंटेंसेस, रीडिंग में आप बेसिक साइंस, फॉर्म्स, शॉर्ट सिंपल टेक्स्ट जो एक कॉम्प्रिहेंशन में होते हैं वो समझ पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे। सो A1 A2 यूजर जब हमारे से अपनी A2 लेवल तक कंप्लीट कर लेता है फ्रेंच, दैट पर्सन कैन राइट सिंपल नोट्स, मैसेजेस और पर्सनल लेटर्स। देन एक B1 B2 लर्नर जब हमारे थ्रू कंप्लीट करता है अपना ये पूरा कोर्स, तो ही कैन अंडरस्टैंड नाउ द मेन आइडियाज ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीच इन लिसनिंग। अब जो लिसनिंग की स्पीड होती है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, दैट कैन इजीली बी अंडरस्टूड बाय अ B2 लर्नर, कैन हैंडल कॉन्वर्जेशंस इंडिपेंडेंटली। नाउ A1 A2 में काफी हेल्प के साथ वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन थी, बट B2 जब आप हमसे कंप्लीट करोगे, आई कैन अश्योर यू, because what our trainers are doing is when the students finish with their A2 level, they start to communicate a lot in French. Then they just forget about English and native other languages. They talk a lot about daily situations. So ये जो conversations हैं B2 के बाद, अब काफी हद तक ये आप एक B1 B2 लर्नर इंडिपेंडेंटली अपनी कॉन्वर्जेशन को होल्ड कर सकता है, हैंडल कर सकता है। आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और नैरेटिव्स आप रीडिंग में पढ़ सकते हो। आप अब मोर कंटेंट और टेक्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हो। जहां मैंने पहले शॉर्ट टेक्स्ट की बात की थी, शॉर्ट पैराग्राफ्स की बात की थी, नाउ स्ट्रेट अवे यू कैन राइट अ 200 वर्ड्स essay or an article, right? So for Canada Express entry, CLB 7 plus B2 level is required, is needed. तो आप समझ सकते हैं that if TEF you have to crack that exam, तो आपकी सही कोचिंग होनी बहुत जरूरी है। Now coming to the grammar area, थोड़ा सा मैं आपको ग्रामर एरिया का क्लियर कर देती हूँ। A1 लेवल में, विच इज अ बिगिनर लेवल, you will learn about present simple tense, that I live in Paris। present continuous आप सीखेंगे, I am studying। but in A2 you will start with past simple and future tenses। so I visited London, I am going to travel। so ये बेसिक फर्क आ जाता है, इस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है। आर्टिकल्स की बात करें तो आप लर्न करते हैं अ एंड द, बेसिक यूसेज आपकी A1 में होती है। A2 में थोड़ा सा और आपका द के ऊपर फोकस किया जाता है। देन देयर विल बी प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी इन A1 एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आपके A2 में आ जाते हैं, लाइक मी, हिम और हर। सिंपल प्रेपोजिशंस आपकी रहती हैं A1 में, इन, ऑन, एट एंड इनटू, ऑनटू, अक्रॉस। जो प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट होती है वो आपकी A2 में आती है। So the reason I'm telling you about these grammar concepts is that आपको A1 A2 में एटलीस्ट डिफरेंशिएट हो जाए कि पहले 2 महीने अगर मैं A1 कर रहा हूँ, it's going to be in continuity, वही prepositions, वही articles होंगे, but then there will be introduction of some new articles। Then you see simple introduction of these grammar topics is covered in A1 with a little more complex grammar concepts in A2। Questions की बात करें तो जो A1 है, A1 में जो क्वेश्चंस होते हैं दोज आर जस्ट येस और नो रिलेटेड, ठीक है। इतने ही कवर होते हैं। जब आप स्पीकिंग में A2 लेवल में पहुंचते हो तो डिफरेंट टेंसेस के साथ अब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे वेयर डिड यू गो। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट येस और नो, इट्स लाइक मोर टेंसेस दोज आर यूज्ड इन A2। एडजेक्टिव्स की बात करें तो A1 में अगर आपको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं बिग, स्मॉल, हैप्पी जैसे एडजेक्टिव्स अगर आप कवर कर रहे हैं, तो जब आप A2 लेवल में पहुंचेंगे तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स ज्यादा यूज होनी शुरू हो जाती हैं, लाइक बिगर, द बिगेस्ट इज यूज्ड। कंजंक्शंस जो यूज होती हैं लाइक बट और इज यूज्ड इन A1, because, so, although is used in A2। so you see very basic things, basic grammar concepts are covered in your A1, but when it comes to A2 तो वो थोड़ा सा और एक फॉर्म ऊपर चली जाती है। सो इन समरी, A1 grammar is survival for present and immediate needs। A2 grammar is where you start handling your past, future, like you give more advice and more comparisons। तो ये मैंने अभी आपको आपके 3 to 4 months का A1 A2 का। okay, so we have a question। Fardeen wants to know that how long does it take to reach each level of French।
So that I was coming to that point only, दैट अभी मैंने आपको A1 A2 की एक कंप्लीशन का टाइम बता दिया है कि आप 3 to 4 मंथ्स में अपना A1 A2 कंप्लीट कर सकते हो. अगर मैं आवर्स में आपको बताऊं तो 60 to 100 आवर्स आपको अपने एक लेवल को देने चाहिए जरूर. एंड मेरे हिसाब से वो टाइम आपका A1 A2 का ही होना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग स्पेसिफिक लैंग्वेज देन वी अंडरस्टैंड दैट जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने बहुत जरूरी होते हैं, वहीं से फाउंडेशन है. तो when you will come to your B1 B2 then more hours are required, because वहां पे ना प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है. So I would suggest that 60 to 100 hours at least in one level, that is your A1, and which comes to around you see that 2 months at least आपको A1 में देने चाहिए. So 2 months करके हमें अगर 6 levels complete करें C2 तक, और अगर मैं C2 को ना भी देखूं, मैं टेफ प्रिपरेशन के हिसाब से देखूं, then 4 levels you have to complete, जिसमें आपका 7 to 8 months का टाइम आप डिवोट करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे. So I was talking about the levels. I wanted you to know, जैसे A1 के सिलेबस की भी बात करूं तो they are just going to be material, that is samples that are going to be in just one word, right? We'll be telling you about days of the week, alphabets, numbers, days of the week, months of the year, then we have seasons, then we have a little bit of self introduction plus the grammar portion that I've told you. So this all will be covered in your 30-day period, and then again 30 days where your trainer will be giving you more concepts. So to make you understand this way, A1 is like being a tourist asking for directions. B1 is like being able to live and study in France. C1 and C2 is where you could work as a journalist or a lawyer in Paris. So this clearly shows that A1 है जो वो एक डायरेक्शंस पूछने लायक फ्रेंच बोल सकता है. B1 जो लर्नर है वो रह सकता है, पढ़ सकता है फ्रांस में. लेकिन C1 C2 जो है वो एक जर्नलिज्म में भी अपना करियर ढूंढ सकता है और लॉयर भी बन सकता है पेरिस में, बिकॉज इज वेरी वेल अवेयर, राइट? So basically when I talk about your levels in French, it's important that you know that ये जो nouns हैं, pronouns हैं, then we have articles, how you have to cover them. Last time when I was talking about your TEF preparation, और मैंने आपको बताया था that the number of questions you will be getting in your reading will be 50. So 50 questions plus 60 minutes of time. So here you see that जो शुरू के 10 to 12 15 questions होते हैं सिर्फ वो A1 A2 लेवल के होते हैं. एंड सिमिलरली यू विल अंडरस्टैंड, जब आप मेरे वो टेफ के स्ट्रक्चर को अब जब अंडरस्टैंडिंग इन लेवल्स के साथ करोगे तो यू विल रियलाइज दैट हाँ मतलब A1 A2 से बियॉन्ड आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए इफ यू वांट टू गिव दैट एग्जामिनेशन, बिकॉज सिर्फ 10 to 15 क्वेश्चंस हैं. those will be this A1 A2 level. बाकी distribution B1 B2 और C1 C2 से होगी. So it's important that you invest good time in your A1 A2 also. At the same time it's important कि जब आप practice की बात आई है B1 B2 में, then also you're giving good enough time, at least 3 months. Yes, I understand we have students coming in जो कहते हैं work permit expire होने वाला है, we only have 6 to 7 months, फिर उनका पूरा कोर्स जो है वो फास्ट ट्रैक में जाता है. सो वी देन प्रोवाइड देम दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग जहाँ पे वो वीकेंड बैचेस भी ले रहे हैं, फास्ट ट्रैक में ले रहे हैं. 1.5 आवर्स की ड्यूरेशन रहती है इस क्लास की. एंड उसके बाद क्या होता है कि जो 2 महीने का हमारा कोर्स है एक लेवल पे, जो हम 2 मंथ्स आपको इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, वो ही कहीं ना कहीं 1.5 में हम कट शॉर्ट कर देते हैं. समटाइम्स वी इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, बट पर्सनली आई डोंट बिलीव इन इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन until and unless the student demands, because 1.5 hour से ऊपर पढ़ने का आप concentration नहीं आप इतनी दे सकते, वो concentration break हो जाती है. So this whole system it works like that कि आपके 6 to 7 months में हम आपके पूरे levels complete करवा दें. Then जो 1 month additional हम students को invest करने के लिए बोलते हैं that they should not give their exam, rather they should prepare more, is because अगर आपके पास टाइम है, आपके पास आपका वर्क परमिट एक्सपायर नहीं हो रहा,
give yourself that time before you give your TEF exam, because your students समझते नहीं है. When an examiner is sitting in front of you, 90 to 95% he is going to be a native French speaker. So native proficiency आपकी ट्रेनिंग में भी होनी बहुत जरूरी है. This is the reason I tell students, जब आप written expression की भी बात करते हो, that is your written module in French, वो भी जो चेकिंग के लिए जाता है, that is checked by a native, at least if he or she is not a native but a C1 C2 level examiner. So ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, when you have to write a story in French, or maybe you have to write an article for a newspaper in 200 words, उसमें स्मार्टली वर्क करना बहुत जरूरी है. विद डेली प्रैक्टिस एंड स्मार्ट टिप्स that we keep on telling on our social media handles also, you can easily crack this exam. So हमें smartly move करना है. We don't have that much time जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा time invest कर रहे हैं, और at the end we are wasting a lot of time. So this was the reason I wanted you all to know about the levels, because A1 A2 इसको revise करते हैं. A1 is your beginner, A2 is your elementary, then B1 is your intermediate, and B2 is your upper intermediate. Then C1 C2 are advanced levels. So C1 C2 तक, as I have told you earlier, कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए जब हमने एग्जाम देना है टेफ का, आपको C1 C2 तक पहुंचने की जरूरत नहीं है. आप टेफ का एग्जाम देके जो C1 C2 है उसको आप होल्ड कर सकते हो, अगर ओनली इफ यू हैव दैट मच ऑफ टाइम और यू आर इनटू फ्रेंच प्रोफेशन, आपको कुछ लॉयर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, आपको इस लैंग्वेज का ट्रेनर बनना है, देन यू कैन गो फॉर C1 C2. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन योर फ्रेंच स्पीकिंग, जब हमारी लेवल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे योर ट्रेनर विल एनकरेज यू टू स्पीक मोर, बिकॉज फ्रेंच में वो फ्रेंच का एक्सेंट आना बहुत जरूरी है. वी विल बी टेलिंग यू द स्ट्रैटेजीज जहां पे इंग्लिश बेस्ड वर्ड्स जो कि सिमिलर लगते हैं फ्रेंच जैसे, वी कैन टॉक अबाउट दैट, and we can talk about more tips and techniques and strategies जहां आपका टाइम कम वेस्ट हो. Because when we are learning for our entertainment, we have a lot of time, but we have to give this exam जिसके लिए जो time period है that is very limited. So learn through us. I'm telling you again, give us a chance so that you can understand, at least after covering one level, that how do we function here at the Teachers Academy. Because students who are already learning through us are really satisfied. A1 level complete होते ही they are not giving or taking break in between, and they are just straight away starting with their A2 level. So TTA classes एक ऑनलाइन ऐप है जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस एक एडिशनल चीज है जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, बट you will be getting one-on-one training, you will be getting your class timings which will be flexible schedules, then you will be getting all the sample papers, your practice sessions जो हमने काफी रिसर्च के बाद ये पूरा फॉर्मेट और कंटेंट रेडी किया है. So stay tuned. Next week we'll be doing another live, and I'll be informing you about the topic that I am going to choose. Still, if there is anything, you can anytime comment on my Instagram or YouTube, and then we can work on that live webinar. Thank you so much for joining in. Thank you.